Hello, hi, ପିଲାମାନେ ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା and welcome to my channel Easy Chemistry। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ प्लस टू फर्स्ट ईयर CHSE कुह और CBSE कुह NCERT रो आमे फर्स्ट चैप्टर टा पढ़िबा को जाउछे, that is some basic concepts of chemistry। chapter ना होचे some basic concepts of chemistry। This is your first chapter and it is the fundamental of chemistry। Let's start। So पिला माने मु सेशन स्टार्ट करिया पूर्व कहिया चाहूची जे एठी हमरो एठी देखो हमरो जो एनसीईआरटी अछि मु सब एनसीईआरटी टा क्लियर करछि। एनसीईआरटी रो प्रतिटी लाइन एठी क्लियर हेछि। सो देखो स्टार्ट करिवा। सम ऑफ द केमिकल चेंजेस कॉर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क। मिल्क रो हमरो कॉर्ड बना हुए। ओके, सो सेठी कम हुए मिल्क रो जहा प्रॉपर्टीज कॉर्ड रो ता प्रॉपर्टीज नुह पूरा अलग। मिल्क टा हमरो कॉर्ड हिला परे कॉर्ड रो मिल्क हे परिबनी। सो इट्स अ केमिकल चेंज। Another example is formation of vinegar from sugar juice। sugar juice रू हमें केमती vinegar formation करचे। so sugar cane juice जो आखु रस कहउछ से को रखा है कि ताको फर्मेंट करा हुए। ओके, गोटे दिन दि दिन एमती पूरा टाइट कंटेनर रे रखा है कि ताको फर्मेंट करा हुए आ ताको सनलाइट भी दिया हुए। तापर ताको देखो छना हला परे जहा बोतल रे रखा होचे सेटा विनेगर को कन्वर्ट हो जाइए। ओके, जानचो विनेगर रो यूज। सो सुगर केन एंड विनेगर टू डिफरेंट थिंग्स। सो विनेगर आउ जूस हे परिबन, दैट मींस इट्स ए केमिकल चेंज। जैसे लॉस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रे रस्ट लागबा, आयरन टा बाहर पड़ी के रहिले कोनोसी लुहा जिंस सेटा पानी पवन बाजी के रस्ट हो जाए। ओके, सो इट्स ए आल्सो ए केमिकल चेंज जोटा पुनर्बार पुणी तार पूर्व अवस्था को फेरी पारे नै। आमे से चेंज टा को केमिकल चेंज कहूचे। सो एथिटू तुमे धीरे धीरे केमिस्ट्री टा कोन, केमिस्ट्री रे इंटरेस्ट टा बढ़िबो, क्यूरियोसिटी बढ़िबो। ओके, देखो तो साइंस को फर्स्ट तो केमिस्ट्री आछि कोट। केमिस्ट्री होची साइंस रो गोटे पार्ट। साइंस रे तुमरो अछि कोन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी। केमिस्ट्री तुमे पढिबो सब प्रकार केमिकल जिंस, सब प्रकार रिएक्शन देखुछ केवल धुआं भरची। सो एभरा इंटरेस्टिंग जिंस एथरे पढिबो। फिजिक्स, फिजिक्स रे सब जेते प्रकार माप चुप देखो एथरे अछि कोन हम मैग्नेट अछि। सो सब प्रकार प्रिज्म अछि। सो ए सब विषय जानिबो। लेंस एंड E इक्वल्स टू mc स्क्वायर आइंस्टाइन इक्वेशन। ओके, सो बायोलॉजी, बायोलॉजी रे हम जानचो बायोलॉजी रे तमे सब एनिमल, ह्यूमन बीइंग। सो बायोलॉजी रे बॉटनी, जूलॉजी जेटा अछि। तो एते सब तुमे प्राणी जगत विषय पढ़िबो। जियोलॉजी मींस एटा माटी विषय पढ़िया को हमें जियोलॉजी को। ओके, देन तो साइंस रे चारटा पार्ट भितरु हमें पढुचे केमिस्ट्री एथरे। एंड व्हाट इज केमिस्ट्री मु पूरा कहिची, पूरा बेसिक रु पढेबी एंड एनसीईआरटी रो गोटे लाइन भी स्किप करबी नहीं। So the branch of science that studies the preparation, properties, structure and reactions of material substances is called chemistry। एटा गोटे ब्रांच ऑफ साइंस जेमती चारटा रहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोलॉजी। सेथरो गोटे होची तुमरो केमिस्ट्री। साइंस रो गोटे ब्रांच studies the preparation, properties, structure and reactions of material substances। कहारो जो मटेरियल सब्सटेंस तुम्हें देखुच तुम आखि आगे, जहाँ भी देखुच तुम आखि आगे, तुम्हें जहाँ को भी धरिल, मन कर गोटे प्लास्टिक बोतल थुआ, से प्लास्टिक बोतलटा धरल, तार प्रिपरेशन से कोठू प्रिपेयर हेची, ता प्रॉपर्टीज कौन, ता स्ट्रक्चर कौन मॉलिक्यूलर लेवल ले, आउ तार कौन कौन रिएक्शन हेई परिबो, से सब स्टडी करिया को आमे कहूछु केमिस्ट्री। ओके, देखो देन डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। गोटे लाइन भी मु छाड़बिनी एनसीईआरटी रे। ओके, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। सो आमे टिके जिबा हिस्ट्री को जिबा केमिस्ट्री रो। सो तार डेवलपमेंट कोट आसला, केमिस्ट्री वर्ड कोठू उद्भावना हेतला, केमिस्ट्री आइडिया कोठू आसला।
सो आम टे जा हिस्ट्री को से देखा कि फिलोसोफर स्टोन गोटे कहला जो रेड कलर स्टोनटा देखुच ताको पारस बा फिलोसोफर स्टोन कह जाउथला व्हिच वुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड एमती कहला कि से ए पत्थर साहाय्य रे आयरन कॉपर भलिया जिंस को आमे गोल्ड को कन्वर्ट कर परतलो ओके एंड सेकंड आउ गोटे सेते थिला जोटार सेटा कहला कि ग्रांड इमोर्टालिटी एलिक्सर ऑफ लाइफ ओके सो गोटे जिनस थाए जोटा कि आमे ड्रिंक कले सब बेले यूथ हेक रहबा से बेला किछि पोषण बाहरला सेते जहाँ तथ्य जना पड़े तो ताकू से थिंकिंग रू आमे कहि परिबा बा थॉट रू आमे कहि परिबा जे किछि केमिस्ट्री भलिया जिनस एथरे अछि then chemistry developed mainly in the form of alchemy or electrochemistry during 1300 to 1600 CE okay modern chemistry took shape in 18th century Europe after a few centuries of alchemical tradition which were introduced in Europe by the Arabs so basically Arabs through 18th century modern chemistry ro development hetla then हम देखिबा ग्लास एंड ग्लेजेस देखो जो ग्लास रे कलर बोतल भरला सेते वर कलर्ड बाय एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट्स लाइक मेटल ऑक्साइड्स सो जो बोतल गुडा कलर देखथिबा ग्लास बोतल गुडा तो से जो ग्लास बोतल रो कलर केमते आसे बा कलर हम केम दे परबा मेटल ऑक्साइड मेटल और ऑक्सीजन रो मिश्रण रे हमें कलर दे परबा ओके जस्ट एबे ती जानता then according to Rigveda tanning of leather and dyeing of cotton okay सेतबेले 1000 to 400 BC रे कराउतला the golden glass of the black polished ware of northern India could not be replicated and is still a chemical mystery these wares indicate the mastery with which kiln temperatures could be controlled kiln कहले that is a high temperature थाए एटी kiln ने एटी बहुत टेम्परेचर रे काम करा जाए above 1000 degree celsius okay so सेठी किछटा आसिला कि हीट रो केमिस्ट्री सहित किछि रिलेशन अछि Cotelius अर्थशास्त्र describes the production of salt from sea okay अर्थशास्त्र रे अछि केमिति समुद्र रु लुण मरा हबो से कथा से शास्त्र रे भी लिखा है ओके सो कॉपर यूटेंसिल्स आयरन गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स सेतबे थिला एबे भी अछि एंड टेराकोटा डिश painted grey pottery these are all shown in the figure okay have been found in many archaeological sites in North India Susruta Samhita explains the importance of alkalis okay so एथिरो हमें alkali रो uses हेतला बोली जानि पारो The Charaka Samhita mentions ancient Indians who knew how to prepare sulfuric acid, nitric acid and oxides of copper, tin and zinc, the sulfates of copper, zinc and iron and the carbonates of lead and iron. Rasopanishad describes the preparation of gunpowder mixture. Tamil texts also describe the preparation of fireworks using sulfur, charcoal, saltpetre. So जो बाण तैयार हुए fireworks से कौन यूज हुए सल्फर चारकोल सल्फेट that is potassium nitrate mercury camphor etc okay these are the history of the development of chemistry it is interesting jinsa अछि Nagarjuna he is a Nagarjuna and he was a great Indian scientist he was a reputed chemist and alchemist and a metallurgist metallurgist means जे metal ऊपर काम करे metallurgist his work Ras Ratnakar deals with the formulation of mercury compounds so mercury compounds ऊपर से काम करथले he has also discussed methods for the extraction of metals metal केमते extract करि हबो गोटे मिश्रण रो okay like gold silver tin and copper a book as Sarnavam appeared around 1800 CE. It discusses the uses of various furnaces
ovens and crucibles for different purposes. So एठी crucible, furnace, oven ये सब relate करे heat सहित. Okay, आम जो furnace थाए से high heat रे perform करे. oven जानचो oven तो आमे घरे भी यूज करू. तो एमती लैब रे भी ओवन थाए केमिस्ट्री लैब रे. फर्नेस थाए फर्नेस रे आहुरी अधिक टेम्परेचर सेठी से हीट प्रेजेंस रे किछि केमिकल रिएक्शन करा हुए. तो सेबे भी से तांको बुक रेटा लिखिथिले. इट डिस्क्राइब्स मेथड्स बाय व्हिच मेटल्स कुड बी आइडेंटिफाइड बाय फ्लेम कलर. सो फ्लेम कलर जो देखि कि तुमे लैब रे सिखिबो क्लास 11 रे बा प्लस 2 फर्स्ट ईयर रे, दैट इज लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड. देखो ये गोटे पिक्चर दिया जाइए तुम ये पिक्चर रु ही तुम्हें बहुत सारा मन रख पार को कलर पाई को मेटल. ओके, देन चक्रपाणी, he discovered mercury sulfide. The credit for inventing soap also goes to him. So soap जो साबुन लगौचे आमे से तारो डिस्कवर किए करथिला चक्रपाणी. त ना मन रखि परिबो पानी अछि ना रे, तो पानी is related to sabun, soap. So Chakrapan discovered mercury sulfide and he also discovered the soap. He used mustard oil and some alkalis as ingredients for making soap. किछि mustard oil, that is सोरिष तेल और some alkalis से use करथिले. Indians began making soaps in 18th century CE. बहुत पुराना रो इंडिया soap making करछ. Oil of aranda and seeds of mahua plant and calcium carbonate were used for making soap. Okay, देखो हिस्ट्रीटा किसी बोरिंग अच्छी बट मु तुम पिक्चर सहित आनी दैट कि तुमको इंटरेस्ट लगे जाना आउ जाना भी दरकार एवढा. The paintings found on the walls of Ajanta and Ellora, which look fresh even after ages, testify to a high level of science achieved in ancient India. So आम जो पुराना मंदिर मानक देखी अजंता एलोरा गुंफारे से जो कला कारुकार्य कराई से भी हाई लेवल ऑफ साइंस आमको देखा मिले. Barahmith's Virat Samhita is a sort of encyclopedia which was composed in the 6th century CE. It informs about the preparation of a glutinous material to be applied on walls and roofs of houses and temples. Okay, glutinous material रे केमिति अठारे आमे सब हाउसेस और टेम्पल पे केमिति चित्र आंकुथले. जो अठा साहाଯ୍ୟରେ जो सब तुमको देखिया चाहूले नृत्य तांकर कला तांकर परंपरा जोड़ा सब. सो से जो ग्लूटिनस मटेरियल भी सही केमिस्ट्री सहित जड़ित. इट वाज प्रिपेयर्ड एंटायरली फ्रॉम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स. सो प्लांट रू से अठा बाहर करथले फ्रूट सीड्स एंड बैग्स व्हिच वर कंसंट्रेटेड बाय बॉइलिंग एंड देन ट्रीटेड विथ वेरियस रेजिन्स. सो एठी रेजिन आसला. रेजिन तो गोटे बड़ पार्ट केमिस्ट्री रो. सो से सेबेठू ही एटा प्रैक्टिस करथले जोटा कि ए पर्यंत भी से अठारे लागिक रहिছে आ आमे देखुचे. सो एते भलो सेटा ग्लूटिनस मटेरियल सेटा प्लांट फ्रूट रो बार्क रो एक्सट्रैक्ट कराए के बॉयल कराए के देन ट्रीटेड कराइतला रेजिन सहित. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टेस्ट सच मटेरियल साइंटिफिकली एंड असेस देम फॉर यूज. तार वेरियस टेस्ट एबे भी करा हो. देखो ये पेज रे लिखा है केमती कि डाए केमती करथिला गुरु हेयर रे एबे जेमती सब हेना पाउडर मिले. ओके, सेमती आगु नेचुरल डाई करा होतला. सब टर्मेरिक मैटर सनफ्लावर ऑर्पिमेंट कोकोनट सब मिसाई के हेयर कलर करिया पे ग्रे हेयर को ब्लैक करिया पे लाइक. सो ए भलिया तुमको पूरा पीडीएफ मिल जाउची तुमको इजी होबा पे पढ़िया पे. एंड तुमको जदि मोर पीडीएफ भल लाउची देन let me know in the comment that say we want pdf. Okay, and मु तुमको सेटा मो टेलीग्राम चैनल लिंक दे देबी प्रोवाइड कर देबी कमेंट रे. यू कैन चेक इट. देन एटी देखो आम जो लिकर यूज करछु दैट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस रे वे लिकर जोड़ा मद कहचे. ओके, that is bad for health, but एटा केमते तैयारी हुए
যেটা চরক সংহিତାରେ মেনশন ହେଇଛି ingredients such as barks of plants, stem, flowers, leaves, wood, cereals, fruits and sugarcane for making ଆଶାବାସ। ସେତେବେଳେ ତା ନାଁ ଥିଲା ଆଶାବାସ, ଏବେ ଆସ୍କା ବଟେ, ରାଇଟ୍।